And what are the issues that you worry about most? Most about want to turn your resources toward? Well, there's a lot of issues. Global warming certainly is a massive threat to mankind, and we are putting a lot of time and energy into trying to come up with alternative fuels and B, we just launched this prize, which is really a prize in case we don't get an answer to an alternative fuel, in case we don't actually manage to get the carbon emissions cut down quickly, and in case we go through the tipping point, we need to try to encourage people to come up with a way of extracting carbon out of the Earth's atmosphere. And there weren't really people working on that before, so we wanted people to try to, all the best brains in the world to start thinking about that. And also to try to extract methane out of the Earth's atmosphere as well. And actually we've had about 15,000 people sort of fill in the form saying they want to give it a go. And so we only need one, so we're hopeful. Always remains the same. Together under the smarts of a man called Richard Branson, who is an incredibly compassionate human being and is coming up with really innovative ways under this umbrella of this foundation that he has to really give back. My name is Richard Branson. I just wanted to welcome you to my forum or my blog, and hope that we can get lots of interaction with people debating entrepreneurial ideas or thoughts about business, and I will be diving in and out on a regular basis to see what you've had to say. Anyway, थैंक यू। इससे क्या हासिल हो रही है सर? एक तो इसका एक ब्रांड है, एक वो खुद भी ब्रांड खोल करता है। इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। अगर आप लिखना चाहें तो इसके बारे में लिखिए। रिचर्ड ब्रांसन, इसकी स्टोरी इतनी इंस्पिरेशनल है। He is suffering from a strange kind of a syndrome. I don't really recall what that is, but उससे होता ये है कि he is not able to see things properly, या शायद पढ़ नहीं सकता चीज़ों को। जी, पता नहीं कुछ है मेडिकल कोई टर्मिनोलॉजी मुझे कुछ आती नहीं थी, लेकिन वो पढ़ नहीं सकता था उसको। बचपन से तो उसको डॉक्टर्स ने कहा था कि फायर आने के लिए। उसके बाद ये अब जो है 2008 में इसका रेवेन्यू आपने देखा 11 बिलियन पाउंड्स, 11 बिलियन इसकी कंपनी का रेवेन्यू। अच्छा, इसने कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कही हैं अपनी इसमें, और एक सेलिब्रिटी ने भी उसके बारे में वही यही कहा कि ये बड़ा इनोवेटिव है, बड़ा इंटेलिजेंट है, और बड़ी इसकी पर्सनैलिटी मुझे ज़बरदस्त लगी है। सबसे जो ज़बरदस्त बात लगी मुझे कि हम फ्री एडवर्टाइजमेंट पर ध्यान दें, फन बेस करें, इस तरह की चीज़ें करें, ठीक है, कि वो आपको फ्रंट पेज पे तो ऑटोमेटिकली लेके आए, ठीक है, बट बी केयरफुल, क्योंकि वो आपकी रेपुटेशन को जेपरडाइज भी कर सकते हैं, कम्प्लीटली स्क्रू होते हैं। तो कुछ भी करने से पहले मतलब अच्छी तरह से प्लानिंग होनी चाहिए कि करना है, ठीक है। आप कुछ भी करें ऐसे बिना प्लानिंग के और कहें कि चीज़ का आउटकम ये हो जाएगा तो गलत। पहले प्लान करें, पहले मशवरा करें, और फिर गो फॉर फ्री एडवर्टाइजमेंट।
even though they have no lack of money, बहुत पैसा होगा इनके पास, but still देखें वो क्या कह रहा है उसका। दूसरी चीज़ है इनोवेटिव, तीसरी चीज़ है मेक अ डिफरेंस। अपना जो प्रोडक्ट है, आपका जो ब्रांड है, आपकी जो सर्विस है, वो किस तरह से डिफरेंट है दूसरे लोगों से, कंपटीशन से। हाईलाइट दैट, हाईलाइट दैट, बी इनोवेटिव। बिरयानी 36 लोग बनाते हैं, बट नाम किसका चलता है? उसकी ऐसी गुडविल है हर जगह जगह जगह। रेडी से उसने शुरू किया था, काम हो गया, ठीक है। और भी लोग हैं बिरयानी, कराची फूड, ये वो सब चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा सेल इसकी होती है। इनोवेटिव हो आप डिफरेंस क्रिएट करें, और आप एडवर्टाइजमेंट से जराए फ्री के और उसमें मतलब फन एक्टिविटीज। लाइक साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी कि फन होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा ह्यूमर होना चाहिए, थोड़ी सी इंटरटेनमेंट होनी चाहिए। उन्होंने भी एक बात कही कि इंडियन जो एडवर्टाइजमेंट जो मीडिया है, वो इंडियन मीडिया जो है वो ड्रिफ्ट कर जाता है कभी कभी अपनी सब्जेक्ट से। बट आई फाइंड दैट वेरी हिलेरियस, मोस्ट ऑफ देयर एड्स दैट दे मेक वेरी हिलेरियस, बड़ा हंसी आता है। एग्जैक्टली, दैट्स क्रिएटिव। इससे क्या होता है कि पीपल लाइक वाचिंग दोस काइंड ऑफ एड्स। वो मुसलसल देखेंगे, फिर एक क्रिएटिविटी देखी, फिर दूसरी क्रिएटिविटी, दे बिकम अ फैन। वी आर ब्रांडिंग आवर सर्विसेज, एक्सपेक्टेशन भी हाई हो जाती है, आप सी एक्सपेक्टेशन भी हाई हो, लेकिन हम कोई फनी चीज़ नहीं कर रहे हैं। सैडली मेरे को भी कोई चीज़ें नहीं आती, तो जोक मारना नहीं आता, तो सही टाइम पे तो कोई हरकत करना नहीं आती, इसकी वजह से मैं हंसा लिटिल एक्सपीरियंस। पर थोड़ी थोड़ी बातें करने के बाद उससे कुछ आ जाएंगी करने होंगे। बट सी द रीज़न फॉर पुटिंग अप दिस लिटिल स्टैंड हियर वाज टू ब्रांड आउरसेल्व्स, ठीक है। तो टेक द अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी मिले आपको, ग्रैब इट, मेक द मोस्ट आउट ऑफ द अपॉर्चुनिटी। आपको पता होना चाहिए, आप ये नहीं कि हर चीज़ में आप स्पैमिंग करना शुरू कर दें। सोशल मीडिया के ऊपर जा रहे हैं, 5 मिलियन यूजर ऑन फेसबुक, 500 मिलियन, 5 मिलियन से पाकिस्तान में थे पिछले साल, अब 6.5 मिलियन हो गए फेसबुक में। तो आप उनको एथिकली अप्रोच करें, ठीक है, और उनको अपना प्रपोजल दे, अपना पिच दे, अपना प्रोडक्ट दे, गेट अ वीडियो दे फॉर योर प्रोडक्ट, फॉर योर सर्विस, एंड ब्रांड योर सर्विस, नॉट जस्ट बाय टेक्सटिंग, नॉट जस्ट बाय दी ओल्ड फैशन लंबी लंबी किताबें, लंबी लंबी वो सारे के सारे हमने लिखत पढ़त कर दी। आई नेवर रीड स्टफ, आई प्रेफर वॉचिंग वीडियोज। व्हाट डू यू थिंक? एग्जैक्टली, आप वीडियोस को देखते हैं, आप उस पर इन्वॉल्व हो जाते हैं, आप देखते हैं पूरी देखिए ये हो क्या रहा है, स्पेशली अगर घूम रखा चलता है, तो नाच हम तो ना चल रही हो, ऑब्वियसली सामने उनके दिख रहे हैं या टाई दिख रही है और पीछे नाच चल रही हो, तो कैसा चलेगा? इट हैज़ टू बी कूल, इट हैज़ टू बी रियली कूल, व्हाटएवर यू डू रियली कूल एंड फन, ठीक है। आगे फिर कस्टमर्स जो है ना चेक के साथ, ठीक है। लेट्स टाइम फॉर अनदर वीडियो। सॉरी, बहुत सारी वीडियोस हो रही है, बट हम क्या करें, मजबूर है, हम लोगों का काम ही वीडियोस है। स्टीव जॉब्स को तो सब जानते होंगे, इनकी बातें भी इनके जैसे ही Imagine it's about value. This is a very complicated world. It's a very noisy world. And we're not going to get a chance to get people to remember much about us. No company. And so we have to be really clear on what we want them to know about us. Now, Apple, fortunately, is one of the half a dozen best brands in the whole world. Right up there with Nike, Disney, Coke, Sony. It is one of the greats of the greats, not just in this country, but all around the globe. But even a great brand needs investment in caring if it's going to retain its relevance and vitality. And the Apple brand has clearly suffered from neglect in this area in the last few years. And we need to bring it back. The way to do that is not to talk about speed and beef. It's not to talk about what's the negative. It's not to talk about why we're better than women. The dairy industry tried for 20 years to convince you that milk was good for you. The lie that they
it anyway. And the sales are going like this. And then they try to drop milk and the sales are going like this. Drop milk isn't even talking about the product. That's what the sold is on the absence of product. But the best example of all, and one of the greatest jobs of marketing is the universe has ever seen in thing. Remember, Nike sells a commodity. They sell shoes. And yet, when we think of Nike, we feel something different than the shoe company. In their ads, as you know, they don't ever talk about the product. They don't ever tell you about the air soles and why they get a new box air soles. What does Nike do in everything? They honor great athletes and they honor great athletes. That's who they are. That's what they are about. Apple spends a fortune on that. You never know. You never know. So, when I got here, Apple just fired the agency and in a competition of 23 agencies that 4 years from now would pick one. So, काट दिया वीडियोस ये वाली वीडियो भी आप चेक कीजिएगा यूट्यूब पे इसकी पूरी स्पीच है इसकी ये लोग जो है ये ऐसे ही नहीं हो गए ग्रेट लोग आज तक इनको जानते हैं इज्जत करते हैं इनकी वजह से ब्रांड्स चल गए थे इनकी वजह से इनका आईपैड आईफोन और ये चीज़ें चली सबसे पहले आईपॉड हुआ हिट उसके बाद आईफोन आ गया आईफोन 2 आया फिर आईपैड आ गया राइट उसके मरने के बाद सेल्स देखना कितनी चली इसके स्टेटिस्टिक्स में कल देख रहा था एक महीने के अंदर कोई 1 मिलियन यूनिट्स सेल हुए आईपैड 2 के जब वो लॉन्च हुआ था उसके 30 डेज के अंदर 1 मिलियन यूनिट्स और सेल्स अच्छा इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि नाइकी एक ब्रांड है ठीक है नाइकी ने कभी भी अपनी एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर अपने जूतों को प्रमोट नहीं किया अकॉर्डिंग टू डिस्प्ले उसने हमेशा एथलीट्स को ऑनर किया और ब्रांड को अपने एथलीट्स के साथ लिंक करेंगे एसोसिएट करेंगे ठीक है एथलीट्स को ऑनर करना दिस इज अनदर वे अनदर टैक्टिक आप क्या तो किसी अपने ब्रांड को अपनी सर्विस को अपने प्रोडक्ट को किसी ह्यूज कंपनी ग्लोबल कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं एसोसिएट करने किसी के साथ किसी सेलिब्रिटी के साथ किसी सेलिब्रिटी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना है शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर बने हुए वो टैग भी वो पता नहीं कौन सा ब्रांड है उनके ब्रांड एम्बेसडर है इसी तरह शाहिद कपूर साहब क्लियर के ब्रांड एम्बेसडर हैं हम सफर वाले जो है वो भी क्लियर फवाद साहब फवाद जो है वो भी क्लियर के एम्बेसडर बने हैं वसीम साहब वसीम अकरम साहब हैं बिग फैन ऑफ वसीम साहब वो जो है यूफो के मैं सोच रहा हूँ दोबारा अपना कनेक्शन यूफो पे सोच रहा हूँ तो ये लोग किस तरह से होता है ये इम्पैक्ट होता है आपको इम्पैक्ट डालना है अपने जो ब्रांड के बारे में दिस इज ब्रांड बेसिक स्टफ दिस इज ब्रांड सेलिब्रिटी को पकड़े उसको अपना एम्बेसडर बनाना कम अप विद न्यू आइडियाज come up with new ideas, be innovative. वही अगर आप old fashioned old techniques जो follower बनेंगे आप, then you will never be able to do something big. You will be able to achieve success. You can be successful to a certain extent, but you will never hit it big. To be, to hit it big, you have to be very, very creative. You have to think out of the box. कुछ ऐसा करना होगा जो किसी ने कभी नहीं किया. Time for another video. Brand is what prevents something from being a commodity. It's what's special and unique about something. It's why I pay more for a cup of coffee at Starbucks than the coffee down the street. Coffee down the street may be better, maybe swill, I don't know. But the Starbucks brand assures me I'll get a good, strong, although slightly over-roasted to my taste, cup of coffee. The Burger King brand is why my cheeseburger fanatic friend Bob eats at Burger King's when he travels. When he's at home, he rarely goes to Burger King, but on the road he does because he knows exactly what he's going to get at every Burger King. Burgers might not be his favorite, but he's happy with them. Whereas if he goes to the diner down the street,
He may or may not like the burger. He doesn't know and rarely takes the chance. There's trust and safety in brands. Personal branding is branding applied to you. It's what's special and unique about you. It's why you're not a commodity. Your personal brand is quite simply who you are. ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो है, बाद में सुनाएंगे। इसमें इन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है, ट्रस्ट होता है, क्वालिटी होती है। हमने पहले भी कहा था कि क्वालिटी ब्रांड इज क्वालिटी। अब यहाँ पे भी ट्रस्ट है। इन्होंने एक जो बात की है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रस्ट है। यू ट्रस्ट आवर more than other hospitals. You trust their quality more than other hospitals. Similarly, you trust Nestle mineral water more than other water bottle companies, right? You go for Nestle. ठीक है? इसी तरह आप कोई किसी ब्रांड को ढूंढ रहे होते हैं, when you're buying a chewing gum, you go for a brand. What chewing gum do you like? Chewing gum. There's never be a What chewing gum do you like? Fresh. Another good chewing gum. And what chewing gum do you like? Fresh. You see? Brands जो हैं, ये होते हैं। अब आप जाते हैं, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जो सबसे पहली वीडियो प्ले हुई थी, उसमें एक ज़बरदस्त बात थी कि अगर आप अपने ब्रांड्स को एज अ वर्क यूज करना शुरू कर दें, मतलब आप नहीं, आपके कंज्यूमर्स आपके ब्रांड को एज अ वर्क यूज करना शुरू कर दें, Google it, Skype it, Photoshop that. That is your success. That is when you know कि आपका ब्रांड स्टार्ट है। आपका फोकस जो वो होना चाहिए डे वन से। And मैंने अपने ब्रांड को ऐसा बनाना है, मंटू से बनवाना है, वीडियो बनानी मंटू से करो, पिक्चरें खिंचवानी है मंटू से खिंचवाओ, इवेंट्स है मंटू से करवाओ, एडिटिंग है मंटू से करवाओ, एनिमेशन है मंटू से करवाओ। That should be your goal. हमारी कंपनी लाइक साहब कह के गए थे कुछ, एंड इट इज सैड दैट नॉट मेनी पीपल सिटिंग हियर नो अबाउट अस। हम लोग यू नो प्रीटी एक्टिव है, यू नो इस तरह की मीडिया जो गैदरिंग्स होती हैं छोटी छोटी, और जाके एक मकसद क्या है, ब्रांडिंग। आजकल हम ब्रांडिंग कर रहे हैं। मेरे ख्याल है बाहर साहब को मैंने देखा था लेके खड़े थे रेहाज स्कूल के लिए फोटो खींच रहे थे। पता नहीं आपने से कितना नहीं किया, आपने सबने कर यहाँ स्कूल के साथ नहीं किया, हम करेंगे। एक आपने किया, एक आपने किया, आपने किया। अभी हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक बैनर लेके खड़े हो, हम आपकी फोटो भेजेंगे, उसको फेसबुक करेंगे। द इंटेंशन बिहाइंड दिस होल आइडिया इज टू ब्रांड अस। अभी आप देखिएगा यहाँ स्कूल के पेज पे जाइएगा एंड यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। योर ब्रांडिंग, यहाँ स्कूल इज अ फ्री एजुकेशन सिस्टम। नहीं मुतारिफ कराया, देखा कि यहाँ पे लोग जो हैं हमारे ड्राइवर हजरात, कुक हजरात, माली हजरात, इस तरह के जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उनके पास एजुकेशन उनके पास वो नहीं है, या दे वर नॉट प्रिविलेज्ड टू गो टू स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी वगैरह। उनके लिए ये एक आइडिया कि मोबाइल पे जब उनके पास ऑलरेडी कॉन्टेंट है, that they're spreading like wildfire, lovely चीज़ें, music videos, funny stuff, accidents and this kind of thing. Why not educational stuff? आप class 1, class 2, class 10 का curriculum डाल दें, videos के ऊपर, memory cards के ऊपर share करें। That's the whole idea. और उसमें हम क्या चाह रहे हैं, हम youth को target कर रहे हैं कि youth की photos लेंगे, इनको ambassador बनाएंगे और इसकी वजह से हमारी branding होगी और What do you think about this? Nice है। ऐसी कह रहे हैं आप वाकई nice है। Why just youth? Why just youth? Why just youth? Well, sorry, शायद मेरे से गलती होगी, but हम जो भी हमें मिलता है, चाहे वो लाला हो, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो सेलिब्रिटीज हो, चाहे वो फॉरेनर्स हो, भी हम लोग एक्सपो सेंटर गए थे, वहाँ भी हमने मकसद ये था ब्रांडिंग, अवेयरनेस। इट्स अबाउट क्रिएटिंग अवेयरनेस, टेलिंग पीपल व्हाट यू डू, व्हाट यू आर अबाउट, ठीक है, इट्स योर आइडेंटिटी। तो हम लोग एक्सपो गए, वहाँ जाके हमारा मकसद था कि इंटरनेशनल लोगों से मिले, काफ़ी सारी
उनको पता है